This meeting is being recorded. Gratitude greetings. I'm filled with great joy because I'm sitting in front of a great coach. 1,300 hours of coaching experience, 250 plus clients, 9 countries, and she can empower anyone effortlessly. She's a 2xTEDx speaker and author of 3 books. She's Smita Das Jain. Welcome. Thank you, Sunny ji. Really nice to meet you and glad to be here with you today. Thank you. मुझे अच्छा लग रहा है. मुझे भी. Please tell me the secret of your success. Okay. In simple terms, Sunny ji, discipline and consistency. Okay. Uh, of course, the fact is I have a certain background. The fact is I work damn hard for what I do. Like in the morning, I get up at 5 a.m. and kabhi, it is like 10 p.m. and I shut my laptop. Though I'm never tired because I love what I do. But everything takes hard work. But when I say hard work, okay, you can do a lot of things and mindlessly. कि कोई ये कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है डिजिटल एडवर्टाइजिंग ट्राई करो, अच्छा सारे कोचेस डिस्कवरी कॉल ले रहे हैं तो मैं भी लूं. आई एम नॉट सेइंग देयर इज अ राइट और रॉन्ग, बट एक चीज ये है आपकी स्टोरी आपकी अपनी है. ओके, सो यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी एंड आई एम डिफरेंट फ्रॉम अ थर्ड कोच. We all have our niches, and it makes, in order to succeed, it's very important, number one, to identify our niche. हम किसको best serve कर सकते हैं. Second, what is the best way to reach that person. एंड थर्ड, वंस यू फिगर आउट द बेस्ट वे, जब आप स्टार्ट करते हो, लाइक 3 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड कोचिंग, आई फिगर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एक्सपेरिमेंट बहुत किए थे. 10 चीज ट्राई किए, 8 चीज फेल हुई, 2 चीज सक्सेसफुल हुई, एंड आई रियलाइज दिस इज व्हाट इज वर्किंग. और मैं वो 2 चीज आज तक कंसिस्टेंटली कर रही हूँ फ्रॉम द लास्ट 3 years. And morning 5 बजे से उठ के, and every day, I mean, there are some calls I do every day, there is writing that I do every day. So एक वो consistency चाहिए होती है. Success का secret यही है, don't quit too early. And also when it is evident कि ये चीज work नहीं कर रही, don't stick to it for too long just because कि कभी ना कभी ये काम कर देगी. You have to figure out. But when you figure out, stick with those things. Like for me, okay, search engine optimization is something I self-taught myself. My website is made based on that. And मैं अभी तक करती रहती हूँ. 3 साल पहले start किया था. This is something that has started paying off. So consistency, discipline. रोज रोज 5 बजे उठना कभी कभी मुझे भी नहीं अच्छा लगता, बट irrespective of अच्छा लगता है नहीं लगता, मैं उठती हूँ and I follow a certain routine. तो कोई अगर कंसिस्टेंट हो, कोई डिसिप्लिन हो, देयर इज नो वे सक्सेस नहीं आएगी. इट इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर. आप कोई चीज बार बार करोगे, यू हैव टू इम्प्रूव. दिस इज व्हाट नेचर सेज. ऐसे ही होता है, राइट? Very, very beautiful. DC, discipline and consistency. मजा आ Yes, that's a nice acronym. You're गया. beautiful. Yes. What is the secret of your smile? Right now it's because I'm meeting you. So it is always nice. You are smiling, so I am smiling. The other thing is, for all of us to keep smiling, look at the positive sides of life. Like today, मैं honestly बोलूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है. I am feeling like कि, my body is breaking. But honestly, if I look at my physical state, आज थोड़ा सा ये है. But the fact is, I am looking at the positive side. I have had some great coaching sessions since today morning. I'm planning something new and exciting, which hopefully next week तक वो कुछ shape में आ जाएगा. I'm happy in doing it. I have had a great feedback from a client जिसका cycle खत्म हुआ. That person really complimented me. So I am choosing to focus on the positive side जो लाइफ में है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओ गला खराब है, ओ तबीयत ठीक नहीं है एंड ऑल. सो दैट्स द सीक्रेट. Winston Churchill. You keep going without losing enthusiasm. Very good.
Now, or I would just modify it, if you permit me. sure. You find things to be enthusiastic about and keep going. बिल्कुल, बिल्कुल. Find ways to be happy. Be happy by Yes. default. Yes. Yes, absolutely. Now, you have had rich experience in coaching. You have given two TEDx talks. So, what was the essence of your TEDx talks? So the first TEDx talk that I gave in that was in April 2022. It was on diversity, equity, and inclusion. So the theme was include all and grow tall. And I have a rich corporate experience. So before I became a coach 3 years ago, I worked for 14 years in the corporate world. And during that time, diversity and inclusion came from being nothing to being an overarching theme. Like every company, especially large companies, are focusing on that. And I realized कि ठीक है, आप कैंपस जाते हो, आपके हायरिंग टारगेट्स होते हैं कि हायर दीज मेनी वुमेन, हायर दीज मेनी पीपल फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड ऑल, हर एक अच्छे कंपनी का होता है. But it is not necessary that all the diversity plans lead to inclusion. ठीक है, आपने मोर वुमेन को हायर तो कर दिया, एंट्री लेवल में फीमेल आ गई, देन एट सम स्टेज शी गेट्स मैरिड, देन शी स्टार्ट्स अ फैमिली. बाय द टाइम शी इज इन द मिडिल स्टेज ऑफ अ करियर, फैमिली डिमांड्स आती है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क लाइफ बैलेंस सपोर्ट नहीं होता. सो व्हाट हैपेंस, आपने हायर तो कर लिया, बट एट अ स्टेज शी डिसाइड्स टू मूव आउट. देयर आर अदर रीजंस आल्सो, माइक्रो एग्रेशंस होते हैं, ये होते हैं. So that was the essence of my first TEDx talk. Why all the diversity initiatives, despite the best intentions of the organizations, do not lead to inclusion, and what can be done about it. So uska solution kya hai? So that was about the first TEDx talk. The second TEDx talk, which I gave in November last year, it was around sustainability and environment. So again, looking at my corporate background, I chose to focus on sustainable focused leadership. द थिंग इज कि आजकल आपने भी न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज पे फोकस करो. ESG इज अ थीम दैट इज कमिंग अप इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एनवायरमेंटल सोसाइटी एंड गवर्नेंस, उसका स्कोर होता है. एंड बहुत सारे मेट्रिक्स है जो ट्रैक होते हैं. बट इन द एंड, अनलेस वो लीडरशिप माइंडसेट में चेंज हो, लाइक एज अ लीडर हमें क्या सिखाया जाता है. लाइक आई डिड माई MBA फ्रॉम IIM-Indore. शुरू से ना यही इंस्टिल किया होता है कि फाइनेंशियल टारगेट्स देखो, टारगेट ये रेवेन्यू अचीव करना है, ये टर्नओवर अचीव करना है, प्रॉफिट इतना होना चाहिए. सो इफ आवर माइंड इज फोकस्ड ऑन दैट, हम सस्टेनेबिलिटी में कैसे फोकस करेंगे इफ वी आर नॉट मेजर्ड on that target? So for leaders to be really serious about sustainability, there needs to be a mindset shift. And when the leader's mindset shifts, they will also cascade अपने organization के metrics वैसे ही change करेंगे. That apart from profit and all, आप ये चीज़ भी measure करो कि आप society में क्या contribute कर रहे हो, planet में क्या contribute कर रहे हो, और सिर्फ measure मत करो. Just like your compensation is tied to business metrics, it should also be tied to sustainability metrics. तब जाके change आएगा. So that was the essence of my second TEDx talk. Sustainability focused leadership. Amazing. Now your three books. उसमें से favorite कौन सी है? Wow. This is this is always difficult, तीनों तो मैंने लिखी, but if since you're asking me to pick one, okay, so मेरी three books, all three अभी तक are in fiction domain. The first one and the third one are short story collections. The second one is a novel. Okay, and it's about like what the protagonist is a working woman facing challenge, work life balance, and the protagonist एक होता है ना, there is no black or white character, characters are grey. आजकल मूवीज ऐसे बनती है. So इस नॉवल में सभी characters grey है. You cannot find one character who is completely white. So even though this is my second book, मैंने इसका draft पहले लिखा था, even before I published my first book, which is a slice of life. And एज यू सेड, मतलब एक मदर के लिए तो हर चाइल्ड ही इम्पोर्टेंट होता है, बट कोई जो पहला होता है उसके साथ एक स्पेशली अटैचमेंट होता है.
So since this was the first, even though it got published second, but this was the first draft I have written, and it's a novel and बहुत complex novel to attempt as my first subject, which was received really well, despite the complex protagonist. So I would say this one is my favorite, A Price to Love. Very nice. Your big dream. My big dream. Oh, I dream all the time. So, जब 3 साल पहले, when I was in the corporate world, I wanted to be the CEO. And then I realized, एक बार मुझे corner office मिल गया. Not the CEO, but some senior position. And corner office मिला. And when I got into the corner office, कुछ दिन बाद ही लग गया, this is not what I want. So then I reset my goal. And then 3 साल पहले, when I pivoted from the corporate world and started on this journey to become a writer and a coach, तब मेरा ये था बस कि इतने क्लाइंट्स आ जाए, थोड़ा सस्टेनेबल हो जाए, so that I don't have to go back to the corporate world again and I can call myself successful. Now fortunately अब वो हो गया, and like when I started, I never dreamed in less than 3 years मेरे अभी 1400 कोचिंग आवर्स होने वाले हैं. So I never dreamed कि 3 साल में मैं 3 बुक लिख लूंगी और 1400 कोचिंग आवर्स हो जाएंगे. अब वो हो रहा है, देन देयर इज दोस बिग गोल्स कि पहले एसीसी बनी आईसीएफ में, फिर पीसीसी बनी, अब एमसीसी बनना है और इसी साल बनना है, एंड लोगों को जितना मैक्सिमम हो सके लोगों के साथ काम करना है एट अ डीपर लेवल, so that they are happy, and I am one of the reasons to make them happy if they are not. Okay, I am one of the ये तो reasons to गारंटी है, remove their blockers. जो आपसे मिलेगा वो खुश हो ही जाएगा. आपकी Thank स्पिरिट, you. आपका एंथुसियाज्म, आपकी खुशी, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल्स, आपका एनालिसिस, Thank you so आपका much for your हेड, kind आपका words. हार्ट. इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. ग्रेट Thank क्रिएशन ऑफ you. गॉड. Okay, now Thank coming to you. a very easy question. My favorite of all the questions is three happiest moments. Okay, 3 happiest moment. First, it was after class 12th, जब मेरे इतने परसेंटेज आए थे कि मैं SRCC कॉलेज में, so I did my BCom honors from SRCC, और अब तो से कट ऑफ 100% हो गया. उस जमाने में भी 95% कट ऑफ था, and I'm talking of like 2 decades ago. So that was the first happiest moment because that was the time जब पहली बार कुछ बड़ा अचीव किया था, like from a small town girl to go into Delhi and इतने परसेंटेज लाकर. That is the first one. The second one was when I got married. So I met my husband was my batchmate in IIM-Indore. So 2 साल मतलब हम लोग साथ IIM-Indore में थे, and then campus placement हुआ वहाँ से, and both of us landed jobs in Gurgaon. And तब तो है कि ठीक है, एक ही city में है, job भी हो गया. So let's get. I mean, of course, we were like doing courtship और शादी कर लेते हैं. So that was such a beautiful moment because that was the time जब IIM-Indore से pass out हो गए थे. एंड नया जॉब लग गया था बट स्टार्ट नहीं किया था. सो इट वाज दैट फेज कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जो थी खत्म है, जो नहीं होने हैं वो स्टार्ट नहीं हुई थी. So those 2 months were absolute bliss, and I was really happy. And the third happiest moment was जब मैंने पहली बार अपनी पहली बुक अपने हाथ में पकड़ी थी. That was when I believed that okay, मैंने बुक लिखी है. I mean, लिखी थी of course, वर्ड डॉक्यूमेंट में था, बट जब वो बाइंड होके हाथ में आती है, like उसकी, if you just allow me, so Sure, sure. ये जैसे बुक We शेल्फ would है love to पीछे. see. So this is like my third book. So जब आप पकड़ते हो ना कोई बुक as a writer, जो joy होता है, that is really indescribable. So ये तो मेरी थर्ड बुक है. जब मैंने फर्स्ट बुक पकड़ी थी, that was like, oh, मैंने कुछ मेजर किया है लाइफ में. आपने बहुत कुछ किया है. You have left a legacy by touching every life you touched in so many ways. लेगेसी तो बहुत बड़ा वर्ड है, ऐसे मत बोलिए. आई एम यंग, और अभी तो बहुत चीज बाकी है ये लेगेसी बुक्स भी एस्टैब्लिश कर. लेगेसी है. हाँ, बुक्स आर अ लेगेसी, दैट आई एग्री. रिटर्न वर्ड तो हमेशा रहेगा, आप रहो न रहो. आईआईटी आईआईएम में ये पढ़ी जाएंगी, आपकी TEDx टॉक सुनी जाएंगी. Very nice. हाँ. So now coming to थैंक very easy questions, one word answers. Life in one word. यू. स्पॉन्टेनियस.
IIM-Indore in one word. Beautiful. Coaching in one word. Purpose. Writing in one word. Passion. Happiness in one word. State of mind. One word nahi hai, but this is what I believe. Love in one word. Self-love. I mean, Success in one if word. you don't love yourself, you can't others. Okay, success in word. Your way. Again, I'm giving multiple words, but नहीं, वो कुछ नहीं success, होता. you I'm create your getting own patience. I'm success. learning from you. Peace of mind in one word. Mindset. Amazing. I'm so thankful to you. Smita in one word. Oh, I'll go with spontaneous, which was my Yes. first answer also. Very Yes. spontaneous as a person. So we started with spontaneity and we ended with spontaneity. And I'm so Yes. thankful to you for giving the gift of your time, for sharing your wisdom, for sharing your beautiful moments, secrets, discipline, consistency. I'm sure each viewer is going to feel inspired, touched by you. And I'm so thankful to you and I wish you all the best in all your noble future endeavors. Thank you. Thank you. My pleasure to get to meet you. Thank you for having this conversation with me. Feeling really grateful to have met you. Thank you.